हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे फार्मा ज्ञान चैनल में, जहां मैं आपको फार्मा से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगी। तो स्वागत है आपका सबका मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। उसका फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया इन द इंडिया। इंडिया में फार्मेसी करियर का इजाद कैसे हुआ वो हम सब देखेंगे इस चैप्टर में। हम तो कौन कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, देन फार्मेसी एज अ करियर, कि हम फार्मेसी में कौन कौन से करियर हम देख सकते हैं। देन फार्माकोपिया, कौन कौन से टाइप ऑफ फार्माकोपिया है, जैसे आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटेन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये गलत हो गया है, इसे यहाँ होना चाहिए यूएसपी। This is the BP, which is known as ब्रिटिश फार्माकोपिया। देन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज है नहीं, बट स्टिल हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इसलिए हमें ये चैप्टर देखना है। सो फर्स्ट, व्हाट इज फार्मेसी? फार्मेसी इज द हेल्थ प्रोफेशन दैट डील्स विद द preparation, standardization, formulation, dispensing, and appropriate use of the medicines and the drug. It intended chemical, biological, and medical science to ensure the effective and safe use of pharmaceutical agents for the prevention, diagnosis, and treatment of the disease. ठीक है, इससे क्या समझा? फार्मेसी इज़ द हेल्थ प्रोफेशन। ये एक हेल्थ प्रोफेशन है जो डील करता है प्रिपरेशन। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशंस आते हैं, जो भी हम में फार्मा प्रिपरेशन देखते हैं, टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर, इमल्शन, सस्पेंशन। इसमें फार्मेसी में प्रिपरेशंस आते हैं, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं हम। फॉर्मुलेशंस, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर करते हैं। डिस्पेंसिंग करते हैं, डिस्पेंसिंग मतलब बेचना, ठीक है, डिस्पेंस करना। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द मेडिसिन एंड ड्रग। इट इंटीग्रेट्स केमिकल, जिसमें chemicals, biological, and medical science to ensure the effective and safety of pharmaceutical agent for the important prevention, diagnosis, and treatment of disease. और simple definition है, pharmacy is the science and practice of a discovery, new drug discovery, producing, preparing, dispensing, reviewing, and monitoring medications, aiming to ensure the safe, effective, and affordable use of the medicine. ठीक है, ये हो गई फार्मेसी की डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। अब फार्मेसी की हिस्ट्री इंडिया में कैसे आई? तो फर्स्ट कुछ एंटरप्रेनर्स है जिनकी वजह से फार्मेसी इंडिया में आई, हम ऐसे कह सकते हैं। 466 टू 377 BC, बिफोर क्राइस्ट, ये आपको पता होगा। सॉरी, AD एंड BC। हम AD and BC. AD means Domini and BC means before Christ, means जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का पीरियड और आफ्टर का पीरियड। ओके, सो 466 to 377 BC में आए हैं Hippocrates. This is the most important name, Hippocrates, which is also known as father of medicines, and his concept were accepted worldwide and are still utilized by the health professions. इसके जो भी concept है वो regarding pharmacy are accepted worldwide and still utilized by the health profession. For 384 to 322 BC, Aristotle, ancient Greek philosopher and scientist है, who is still considered one of the greatest thinker in the politics, psychology, and ethics. Aristotle, Greek philosopher and scientist, who is still considered one of the great thinker in a politics. The next है 4280 AD, means एनोडाइनमी। इसमें है डायस्कॉर्डिस,
131 to 2000 AD। गैलन ऑल्सो सॉलिडिस है, एक ग्रीक फिलोसोफर है, ग्रीक फिजिशियन। डिस्कॉर्ड, इसने मटेरियल मीडिया बुक लिखा है, जिसके 5 वॉल्यूम हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म मटेरियल मीडिया विच इज़ रिटन बाय डायस्कोरेट। Father of medicine, Hippocrates, father of medicine, Aristotle, a Greek scientist, and Dioscorides, Greek physicians who written Materia Media. Materia Media, जिसके 5 वॉल्यूम्स हैं, इंक्लूडिंग वेरियस ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन लाइक opium, hyoscyamus, and naturally occurring drugs with its identification, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज। ये सब मटेरिया मीडिया में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है गैलन। गैलन 131 टू 200 AD में गैलन आया, जिसने ही वॉज फर्स्ट फार्मासिस्ट, जिसे हम फर्स्ट फार्मासिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम फर्स्ट फार्मासिस्ट भी कहते हैं। तो अवेलेबल वेरियस फॉर्मुलेशंस एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। हिज वर्क इज स्टिल नोन एज द गैलेनिकल फार्मेसी। गैलन इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट। इसका वर्क आज भी गैलेनिकल फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर है 1492 से 1541, Paracelsus, which is also known as father of toxicology. He was the chemical entrepreneur, father of toxicology. He was a chemical entrepreneur. He developed mineral salts which might have potentials of being universal curative agent. That the chemical moieties are responsible for treatment of disease। जो है इसने मेंशन किया है, जो chemical moieties है are responsible, chemical moieties are responsible for treatment of disease। okay, chemical moieties are responsible for the treatment of disease। then next है, हमें इसे इन्हें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs में पूछते हैं, लाइक हिपोक्रेटिस पूछते हैं, एरिस्टोटल पूछते हैं, दैन गैलन के बारे में पूछते हैं, मटेरिया मीडिया क्या है, किसने लिखा है। 1945 टू 1751 में ली मर्सियाई, उन्होंने रिपोर्टेड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड बताया। मोस्ट यूज्ड अल्कोहल और मोस्टली अल्कोहल के एक्सट्रैक्शन के बारे में ली मर्सी ने बताया। देन स्वीडन lineage classify the plants and introduce the binomial system of taxonomy, system of naming plant, system of naming plant, taxonomy, system of naming plant, इन्होंने बताया। तो है हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कैसे इंडिया में इजाद हुआ वो देखेंगे। तो ड्यूरिंग 1901 द बंगाल केमिकल्स एंड द फार्मास्यूटिकल वर्क इन कोलकाता बाय प्रोफेसर पीसी रॉय के थ्रू द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ।
1901 में, then 1907 में Alembic Chemical Work was set up in the बड़ौदा में 1907 में Alembic Chemical Works was set up. Then 1922 में introductions of urea, stipamine for the treatment of Kala Azar. Then 1930 Sera vaccines, anesthetic like ether, chloroform, few simple drugs based on the coal tar um, distillation product began. Then 1942 May, Council of Scientific and Industrial Research was restarted. 1942 में Council of Scientific and Industrial Research was restarted. In 1954 में Hindustan Antibiotic Limited was set up to increase the production of antibiotics, especially penicillin and streptomycin. कब हुआ? 1954 में पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड was set up. Then 1960 में collaboration between the research and development R&D department, industry, national laboratory and academic was started. Then 1970 special provisions given in the Patient Act. पेशेंट एक्ट बना था, उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस ऐड किए गए इन 1970 में. देन 1980 to 1990 नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर सेट अप. different manufacturing units pharma industry के setup हुए. The next, history of pharmacy organization in India. Different pharmacy organization कैसे setup हुआ. So in 1920 Calcutta Chemist and Druggist Associate released Druggist Associate in 1926. In 1920 Calcutta Chemist and Druggist Association was released. Druggist Association in 1926. The 1923 Pharmaceutical Association, organization of the qualified pharmacists, which changed its name to the Pharmaceutical Society of India in 1925. The 1923 में Drug Inquiry Committee, which is also known as Chopra Committee, Dangerous Drug Act, under the chairmanship of Paul R.N. Chopra. This is the most important name in this chapter, R.N. Chopra. And this Chopra Committee, Dangerous Drug Act, under the chairmanship, it's established in 1923. Then 1935 All Indian Association United Provision Pharmaceutical Association UPA registered in December, but the name was soon replaced with the Indian Pharmaceutical Association IPA in 1936. Then 1940 Government bought Drug Bill. गवर्नमेंट ने ड्रग बिल लाया कब? 1940 में, टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया में डिफरेंट ड्रग्स हम जो बाहर मार्केट से ला रहे हैं, जैसे उसका इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए ड्रग बिल का इजाद किया 1940 में. दिस बिल वॉज फाइनली अडेप्टेड एज द ड्रग एक्ट ऑफ 1940. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्रग एक्ट 1940. Then next, 1946 Association of Pharmaceutical Teachers of India was formed, where फार्मेसी को पढ़ाने के लिए टीचर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया APTI was founded. In which year? 1946. The 1948 Indian Pharmaceutical Congress Association IPCA Calcutta was floated. IPCA, Indian Pharmaceutical Congress Association, 1948 was floated. Then 1948 one more is there, Indian Pharmacopoeia Commission was constituted under the chairmanship of late Dr. B.N. Ghosh. This name is also important. The B.N. Ghosh, in 1948, Indian Pharmacopoeia Commission was committed in the chairmanship of which
B.N. Ghosh. Then 1946, the Pharmacy Council of India was established. Pharmacy Council of India कब established हुई? 1948. This is the important question. The Pharma Council of India was established in 1948. Then 1980, establishment of Pharmacy Graduation Association (IPGA) was established in 1980. Then history of profession of pharmacy in India. तो different professions of pharmacy, कौन से different professions हैं? So first pharma education regarding, so pre-independent era, independence से पहले pharmacy education was practically non-existing before 1932. 1932 से पहले फार्मेसी का कुछ ऐसा एजुकेशन था नहीं. Then dispensing was done by the compounders with no formal training. हॉस्पिटल में कंपाउंडर्स करके वार्ड बॉय भी नहीं बोलेंगे, कंपाउंडर्स होते थे जो कुछ पाउडर्स को मिला के एक पाउडर बना के देते थे विदाउट एनी ट्रेनिंग. उन्हें हम कंपाउंडर्स करके कहते थे क्योंकि वो डिफरेंट पाउडर्स और फिर केमिकल्स को मिला के गोलियाँ या फिर डिफरेंट पाउडर्स बना के देते थे. सो फर्स्ट फॉर्मल कोर्स, जो फार्मेसी का फर्स्ट फॉर्मल कोर्स आया वो आया 1932 में बाय प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, by Professor M.L. Shroff at बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट फॉर्मल कोर्स आया 1932 में बाय प्रोफेसर M.L. Shroff at Banaras University, a 2 years diploma course of pharmaceutical chemistry. Then next post independent era, इंडिपेंडेंस के बाद में 1944 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म health form then post independent era in 1944 government of India formed a health survey and development committee, Bhura committee. This is also important. Bhur committee which recommended pharma education reform. Then in 1948 formations of the Pharma Council of India CI, Pharma Council of India under Pharmacy Act 1948 to regulate pharmacy education and profession. कब आया? 1948 में Pharmacy Council of India Act PCI आया under the Pharmacy Act 1948 to regulate pharmacy education and profession. Growth of diploma, bachelor's, B.Pharm, masters and PhD programs are also started. Then modern development, introductions of the PharmD, Doctor of Pharmacy in 2008 to promote the clinical pharmacy. Then inclusion of pharmacy education in the health sector under NIP 2020 for the better integration with the healthcare service. This is the summary timeline where the period is ancient period and key highlights as USPNF in India, not published separately but Indian equivalent exists. Provide information on the drug formulation, doses and usage guideline. Then extra pharmacopoeia, Martindale, not an official pharmacopoeia but as reference book published by the Royal Pharmaceutical Society UK, includes detailed drug monograph, therapy used and international brand name. Then next, thank you. वो करेंगे पूरे डिप्लोमा के सब्जेक्ट हम कवर करेंगे धीरे धीरे एक एक चैप्टर्स. ये पहला चैप्टर है, थोड़ा बोर लग सकता है क्योंकि इसमें पूरा हिस्ट्री रिलेटेड है बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ ज़्यादा वेटेज देने लायक है नहीं इस चैप्टर में. सो दैट्स इट. नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे रियल के बारे में. सो फॉलो करते